हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जानेंगे चैप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। तो पहले क्या है, सॉलिड को जानते हैं। तो लोग जानते ही सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है, साइज होता है, क्रिस्टल होता है। सॉलिड क्रिस्टल भी हो सकता है, अमॉर्फस हो सकता है। डेंसिटी ऑफ जो इसका जो डेंसिटी होता है सॉलिड का, वो बहुत ज़्यादा होता है लिक्विड के कंपेरिजन में। ओके, अब देखा जाए तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। द फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अप्लाइंग एंड इट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। इलास्टिसिटी इज दैट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन एंड इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। एंड इलास्टिक लिमिट क्या होता है। The elastic limit is the upper limit of deforming force up to which if a deforming force is removed and the body regains its original and form the completely, and the point if deforming force is increased, the body loses and its property of elasticity and gets permanent deformed. परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है। दिस बॉडी विच रिगेन द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन इमीडिएटली एंड द कम्प्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड द परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड द क्वार्ट्ज, एग्जाम्पल क्वार्ट्ज एंड द फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है। द बॉडी विच डज नॉट रिगेन एंड इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन एट ऑल द बॉडी removal and deforming force are called perfectly plastic body, and example putty and the paraffin wax etc. Behavior, elastic behavior of the solid. When a solid is deformed and the atom or molecules are displaced their equilibrium position, causing a change in the interatomic distance. When a deforming force is removed, interatomic force trends and to drive them back to their original position. Thus, the body regains its original shape and size. Stress, the internal restoring force acting per unit area of a deformed by the from body is called the stress. Stress is equal to restoring force by area, and it is denoted by Newton per meter square or Pascal, and dimension is equal to ml inverse 12 m1 2 होगा और गलती लिखा गया है ml inverse 2 t inverse 2. स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। ओके, स्ट्रेस क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देख लेते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल होता है, टेंजेंशनल होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, स्ट्रेस प्रोड्यूसेस इन अ चेंज लेंथ एंड कैसे होता है, चेंज इन लेंथ बाय मे बी इलोंगेशन, टेंसाइल और कंप्रेशन। नॉर्मल क्या होता है, द हाइड्रोस्टेटिक और वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है। देखो, it is deforming force is applied normal to the area and then the stress is normal and stress. ओके, फिर नॉर्मल और हाइड्रोलिक स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है। इट इज डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द एरिया एंड देन स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, एंड देयर इज इंक्रीज इन लेंथ एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल एरिया स्ट्रेस, एंड डिक्रीज होगा तो कंप्रेशन स्ट्रेस कहेंगे। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड दैट टेंजेंशियली एंड द स्ट्रेस इज कॉल्ड द टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है, द फ्रैक्शनल चेंजेस इन द कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फिगरेशन बाय द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, एंड here it has no unit and dimensionless quantity according to the change in configuration and strain types, longitudinal, volumetry and the shearing. इसमें मतलब फॉर्मूला वाइज है। इसमें क्या है, चेंज लेंथ बाय ओरिजिनल, चेंज वॉल्यूम बाय ओरिजिनल, एंड एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स प्लेस। हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द स्ट्रेस is proportionally to the strain, and the stress strain is on the or stress k into strain, where k is the modulus elasticity of the material of the body and the k is equal to stress by strain होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को ध्यान रखना। मॉडुलस इलास्टिसिटी जानते ही होगी तुमको, नेचर ऑफ द मटेरियल जो होता है ऑफ द बॉडी जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, मतलब इसका जो, हाँ, इट इज डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी एंड द SI यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर।
और पास्कल। टाइप्स ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होता है, देखो मॉडुलस इलास्टिसिटी। The young modulus of elasticity is defined as the ratio of normal stress to the longitudinal stress within the elastic limit. Y is equal to stress, normal stress by the longitudinal stress, okay, and y पे फॉर्मूला दे रखा है, y is equal to delta f by l and mg del l by pi r square. Its unit is newton per meter square or a pascal, and its dimension formula is m inverse and t inverse 2. Bulk modulus of elasticity का था, it is defined as the ratio of normal stress to the volumetric strain within the elastic limit. K is equal to normal straight volumetric, and the K is equal to FV by में A delta V and delta PV is by में delta V, where delta P is equal to P by A and change in pressure and its unit is newton per meter square or and pascal. Its dimensional formula is ml inverse t inverse 2. ओके, अब आता है मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी, इसको टाउ से नोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, एन इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय द शियरिंग स्ट्रेस। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल हो सकता है एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? compressibility of material is the reciprocal of bulk modulus of the elasticity or the compressibility, C is equal to 1 by K, and its SI unit is per Newton meter square, and CGS unit is dyne inverse and C centimeter square, okay। उसके बाद क्या कह रहा है सुनो। समझो, steel is more elastic than rubber, solid are more elastic than the gaseous are least elastic. For liquid, modulus of rigidity is 0, young modulus y and the modulus of rigidity n phi are proposed and by the solid material only. लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? ओके, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? तो देखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स विच इलास्टिसिटी प्रेजेंट इन द बॉडी कॉल द लिमिट इलास्टिसिटी। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस is required to break a wire and is called the breaking stress, and the breaking stress is fixed of their material, but breaking force varies with area and the cross section of the wire, and the safety factor is equal to breaking stress by the working stress। इलास्टिक रिलैक्सेशन क्या होता है? The time delay in the restoring the original configuration after removal of the deforming force is called the elastic or the relaxation force, okay। uh, for quartz and the phosphorus bronze is this time is negligible, okay। and elastic after the effect, देखो, the temperature delay in the remaining the original configuration by the elastic body and after the removal of deforming force is called the elastic effect। इलास्टिक फैटिग क्या होता है? the property of an elastic body and by the virtue of which behavior becomes less elastic under the action of repeated alternatingly deforming force is called the elastic fatigue। ductile material क्या होता है? the material which large and the plastic range beyond the elastic limits are called the ductile material। example copper, silver, iron, etc. aluminum। ductile material are used for the making spring and seats। brittle material क्या होता है? the material which show very small plastic range beyond the elastic limit are called brittle। example glass, cast iron and etc। अब इलास्टोमीर्स क्या होता है? देखो, इलास्टोमर क्या होता है? the material of strain produces a much larger than the stretch and within the limit of elasticity is called the elastomer। and the rubber is इसका एग्जांपल होगा रबर and tissue of aorta and the large vessel carrying the blood from the heart, example the
etc. okay. And the elastomer have no plastic range, इसमें कोई plastic range नहीं होता है. Elastic potential in a stretch wire. The work done is stretching a wire is stored in the form of potential energy of the wire, and potential energy U ये बराबर force average force into increase in length. Okay, and half strain stress into strain or into volume of wire. Elastic potential energy per unit volume U is equal to half strain into stress or half into Young modulus into strain का square, and the elasticity percentage of the stretch spring and into half kx square. U is equal to half strain into stress into strain, half Young modulus into strain square, and elastic potential of a stretch spring is equal to half kx square, where k is equal to force constant of a spring and x is equal to change in length. Thermal stress, the when the temperature of a rod fixed at its both end its change, and then the produced strain is called thermal stress, and thermal stress is equal to F by A is where it is equal to V y A del theta, and where A is equal to coefficient of linear expansion of the material of the rod. And when temperature of gas explodes in a vessel in change, and then the thermal stress produced in the equal to the change in the pressure delta P of the gases, and the thermal stress is equal to P delta P is equal to delta del ky del theta, where k is the bulk modulus of elasticity, y is the coefficient of cubical expansion of the gases, and the interatomic force constant is y is equal k is equal to y r naught, and where the r naught is equal to interatomic distance. Poisson's ratio. When a deforming force is applied at the free end of a suspended wire, and length 1 and the radius r, length L and the radius r, and then its length increased by dl, and but its radius decreases by the dr. Hmm. And dl but radius decreases by the dr. The name of the two types of strain are produced by a single force. First longitudinal strain del ui, and second lateral strain del minus del r by r, and the Poisson's ratio sigma lateral strain by the longitudinal strain is equal to minus r delta r by minus delta r by r by delta u by ui. The theoretical value of Poisson's ratio lies between the minus 1.0.5, and the practical value lies between the 0.5, 0 to 0.5. Okay, the relation between the k y k in phi, tau and sigma. Y is equal to this formula, and 3k 1 minus 2 phi, and y is equal to 2n bracket 1 plus sigma, and sigma is equal to 3k minus 2n by 2n plus k, and 9 by y is equal to 1 by k plus 3, and by a or y, or 9 by 9k and tau by n, and 3k. The important point: the coefficient of elasticity depend on the material and its temperature and the purity, but not stress or strain. For the same material, and the three coefficient coefficient of elasticity y tau and sorry gamma, tau, and k have different magnitude. Isothermal elasticity of gas Et is equal to phi, where the phi is equal to pressure of gases. Adiabatic elasticity of a gas Es is equal to gamma phi, and where gamma is equal to phi p by Cv. Ratio of the specific heat at the constant pressure and at the constant volume. The ratio between the isothermal and elasticity and the adiabatic is, या फिर कह सकते हो ES by ET is equal to gamma is equal to Cp by Cv. Application of the elasticity and the behavioral of material, and in the designing of building, the structural design of the column and the beam and the support, and to find the thickness required for a metal rope to be used in trains to pull up and heavy object. The maximum weight
The maximum height of the mountain is limited by the acoustic properties of the rock and which holds maintain. So guys, thanks for watching video till the end, and you are a part of journey of neet. So don't forget it about it, and so like, share, subscribe as you can, and bye bye, and see you in next video.